Welcome to the course on English for Personal and Professional Development. I am Dr. Narendra Kumar from the L&M Institute of Information Technology, Jaipur, and today I am going to talk about email writing. Let's begin with the learning objectives. The first objective for us today is to know the purpose and function of emails. The second one is to know the key characteristics of an email or of a successful email. Then we would try to understand the structure of an email and look at briefly what email etiquette we should follow. So आज के इस लेक्चर में हम लोग 4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे. पहला है कि ईमेल का पर्पस एंड फंक्शन क्या है. दूसरा, ईमेल के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो उसमें होने चाहिए फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल ईमेल. द थर्ड वन इज़ हम लोग देखेंगे कि उसका संरचना या स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और उनको कैसे कैसे हमको यूज़ करना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज़ टू नो कि कौन से ईमेल एटिकेट हमको ध्यान में रखने चाहिए जो कि ज़रूरी हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. लेट मी बिगिन बाय using the words of Shiva Ayyadurai, who says that this email, he was the inventor of email and he invented it as a means of inter-office mail system. That means within the office हम कैसे communicate करें, within the office sending the information to each other plus sending the notices or memos. So it was a kind of way of inter-office communication. उस इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन से नाउ ईमेल हैज़ बिकम यूज्ड वाइडली. हर तरह की कम्युनिकेशन के लिए अब हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं. वो पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो सकता है, बिजनेस कम्युनिकेशन हो सकता है. सो द पर्पस ऑफ ईमेल एक्चुअली इज़ टू क्विकली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट इट वाइडली एंड स्टिल let it remain confidential. So it's like you can send an email to lakhs of people in one go and it is still not public. It goes to only those lakhs of people, right? तो इसको बहुत सारे लोगों में हम क्विकली भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन को. क्विकली हम कोई भी एक्सचेंजेस कर सकते हैं आइडियाज़ के एंड फिर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, उन्हीं लोगों तक जाएगी जिनको ईमेल भेजा गया है. प्लस ऑफिशियल कम्युनिकेशन में it is really helpful in the sense that you can keep the record of the things as well. तो आपको अलग से record keeping की ज़रूरत नहीं है because all email gets saved on a platform on Google Cloud or any other cloud system. If you're using Google Mail, that is Gmail, then it goes to Google Cloud, or if you're using Yahoo, it will go to Yahoo Cloud system and so on. Now let's look at the key characteristics of successful emails. Successful emails के लिए कौन कौन से एलिमेंट हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. The first one is conciseness, second is accuracy, third is clarity, fourth is conversational tone, and the fifth is the theme, and it should be limited to a single theme. Let's talk about each one of them separately. तो हम सबसे पहले बात करते हैं conciseness की, which means keeping the emails brief and to the point. Always remember, no irrelevant information in email is going to help. It is rather going to defeat the purpose. Because if the person who is receiving the email gets stuck in the unimportant information, your important message will never get conveyed. हमेशा ध्यान रखें कि ईमेल में irrelevant information कोई भी ना आए. जो भी बात कहें वो टू द पॉइंट कहें. एक ईमेल एक स्क्रीन से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. जो एक स्क्रीन साइज एक nobody should be required to scroll down actually. When I say it should not be longer than a screen size, that means that the person who is reading the email should not be required to scroll it down. The person should remain on one screen and the message should be conveyed in one go. I'll talk more about it when we look at the email composition box itself and what facilities or what elements we can use for making our emails effective.
even though they are brief, but they are going to be powerful communication tools. So second one is accuracy. We have to be careful about the spelling accuracy, punctuation accuracy, grammatical errors should not be there. And because of this, whenever we write an email, the first writing of the email should always be treated as a draft. जब भी हम ईमेल लिखें तो पहला जो ड्राफ्ट है उसको हम ड्राफ्ट की तरह ही मान के चलें, उसको रीड करें, और उसमें अगर कोई ग्रामेटिकल एरर्स हैं या पंक्चुएशन के एरर्स हैं या स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं या फिर ऑटो करेक्ट के द्वारा की गई मिस्टेक्स हैं, बिकॉज ऑटो करेक्ट इज़ अ रियली डेंजरस थिंग, इट कैन पुट यू इन ऑकवर्ड सिचुएशन. Remember, other than autocorrect, you should also not use abbreviations to those people who are not familiar with those abbreviations. I remember one case where a person sent a number of abbreviations in an email. बहुत सारे abbreviations उसमें use किए, and the mail was sent to one superior, right? Somebody who was at a higher position. The person received the communication back, और जो वापस कम्युनिकेशन आया उसमें बहुत सारे अब्रिविएशंस थे जिनको कहीं पे भी ढूंढा नहीं जा सकता था. They were just typed in, and the person was struggling throughout the day. What has happened? Why this kind of communication has come to me, which I am not able to decode, right? So when you send the email, you gave the trouble to other person, and now the other person is giving trouble to you. And finally, the person who received those typings which did not mean anything, जो ऐसे ही टाइप करके भेज दिया गया था, received another message in the evening that there were typographical errors in the message, so I'm resending you the email, right? So the thing is that we have to be careful about all kinds of errors, particularly autocorrect, particularly use of the abbreviations if we are sending the email to somebody who is not familiar with those abbreviations. Next thing is clarity. So when I talked about abbreviations, I am also talking about the realm of clarity. जब हम abbreviation को नहीं भेजने की बात कर रहे हैं तो उसका पर्पज यही है कि email communication पूरी तरह से clear होना चाहिए. There should be clarity of message in the email. And to ensure this, always revise, always see whether the email is communicating the same thing that you want to communicate. Please remember, if you do something wrong or if you type in something wrongly, like I once typed in place of SYNC, I typed SINK, which actually means something else, and the phrase that I wrote was I am in sync with you. Now if I say SYNC with you, it means I am in agreement with you, मैं आपके साथ में agree करता हूँ. But if I say I am in SINK with you, what I am saying is that we are both in the sink, and sink means the place where we wash our hands or where we wash our utensils. Now even if it is similar sounding word, but it is giving an absolutely different meaning. तो इस तरह के जो similar sounding words हैं, similar spellings हैं, उनका हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उस सब को हमको ध्यान में रखना चाहिए when we write an email. And remember, email communication is a communication where the person is not sitting across you, and that's why there is no chance of clarification. आप clarify नहीं कर सकते कि आप क्या कहना चाह रहे थे. So it's like faceless communication. So to make this faceless communication more humane, the next thing that you need to be aware of is that the tone of email should always be conversational. Now I am not saying that it should be too informal, neither should it be too formal. ना तो ये बहुत ज़्यादा formal होनी चाहिए, ना ये बहुत ज़्यादा informal होनी चाहिए, but it should give a feeling as if you are sitting across the person and talking to the person. So if it is a talk in an official setting, then it is going to be a different tone of course, but it can still be conversational as if you are talking to your superior and your superior is talking to a subordinate. So उसका tone जो है वो conversational होना चाहिए, बहुत ज़्यादा formal
नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट विल मेक इट कोल्ड. एंड द पर्पज ऑफ ईमेल एक्चुअली इज टू replace face-to-face communication, and particularly in times like these where we are all facing COVID-19 situation, email communication becomes really significant, where we would not like to walk to the colleague next door, but we would want to send an email or maybe make a phone call. So we have to be clear that we write the emails in such a way as if we are sitting with the person in an office setting and talking to the person. Next thing, very significant, and that is the theme. Theme of an email should be single theme. एक से ज़्यादा आइडियाज एक ईमेल में डिस्कस नहीं करने चाहिए. And why it is so? Because email communications are for a purpose, and if the email is not fulfilling that function or that purpose, then it goes waste actually, and no office communication should go waste. Otherwise it is not only the waste of time, but it is also the waste of resources. So time और resources waste ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा फोकस एक सिंगल थीम पर होना चाहिए इन एन ईमेल. एंड हमेशा ध्यान रखें कि अगर बहुत लंबा ईमेल लिखना है, ये एसेंशियल हो जाता है या बहुत लंबी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, then we should use something called attachment in the email. The compose box of an email, where you compose an email, should not be beyond one screen in any case. वो एक स्क्रीन से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. If that is required, that shows that the person who is sending the email is not that effective a communicator, because effective communicators say more things in less words, and that thing you have to bear always in mind. Now let's look at, अब हम देखते हैं structure of an email, and there are 5 particular sections of an email. First one is header, second one is salutation, third one is body, fourth one is the closing part or closing remarks, and the fifth one is signatures. Now let's look at each one of them, and I'm clubbing 2 things together. One is the structure of an email, and the second one is the common email etiquettes. Common email etiquettes और structure, संरचना जो ईमेल की है, उनको हम एक साथ देखते हैं, और ये एक साथ देखने के लिए let's move to the email inbox, जहाँ पे हम एक email compose कर सकते हैं. So this is the screenshot of the email inbox, and let's look at what functionalities are available at our disposal. So the header part, which is the first part, contains 2, which is the person to whom you are sending the email. You need to write the email address of that person here. Remember, don't send a single email to too many people in 2, because you have other 2 functionalities available. You have CC, which is carbon copy. So if you need to copy an email to some people, you use carbon copy, because the people who are in carbon copy, they'll know that that email has been sent to them for information only. They need not act on that email. But अगर आप जो कार्बन कॉपी में रखने वाले लोग हैं उनको 2 में रख देंगे, तो लगेगा कि सबको ही उस ईमेल के ऊपर एक्ट करना है. Whereas एक ऑफिस सेटिंग में सबको एक ईमेल पे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. कुछ लोगों के लिए ईमेल सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा जाता है, राइट. सो यू पुट ऑल द पीपल हु नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ईमेल इन CC, कार्बन कॉपी. द नेक्स्ट वन इज BCC, विच इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी. और जो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं उन लोगों को मेल भेजने के लिए जो ये नहीं जान पाए कि और किन किन को गया है. सो इफ़ यू डोंट वांट टू make the email addresses public, use blind carbon copy. If you do not want other people to know who are the people who are sent this email to, use blind carbon copy. So अगर आप नहीं चाहते हैं कि और लोगों को पता लगे कि मेल किन किन को गया है, तो आप blind carbon copy का यूज़ करें. दूसरा, अगर आप email addresses को public नहीं करना चाहते हैं, तो भी blind carbon copy का यूज़ करें. Now remember, this email is about email etiquette.
So the subject line, which is a part of header, is just email etiquette. Always remember, subject should not be very long. Very long subject means that you have nothing to write in the body of the email actually, or you do not know how the subject of the email should actually be used. अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट में डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, बजाय उसके आप उसको मेल कंपोज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मेल कंपोज करने के लिए आप उसका बॉडी पार्ट यूज़ करिए। सो देन कम्स द सैल्यूटेशन पार्ट विच गोज़ इन दी कंपोजिशन बॉक्स एक्चुअली, जहाँ पे आप कंपोज करने वाले हैं मेल को। एंड दिस गोज़ लाइक दिस: डियर कॉलीग्स, नाउ आई एम राइटिंग टू माई कॉलीग्स, and that's why this salutation is like dear colleagues. If you're writing to your superior, you can use words like dear sir, dear madam, or you can write a name. One of the habits that I've seen amongst people is writing things like respected sir, respected this and that. Now remember, dear is equally respectful a salutation. There's nothing disrespectful in dear. And number two, dear does not simply denote the affection in other setting as we use it. Dear also denotes respect. That's why use dear, no respected this and that. That is a kind of wrong English. So let's talk about the body and the etiquettes that we are using. First one is have a powerful एंड कॉम्प्रीहेंसिव सब्जेक्ट लाइन. सो सब्जेक्ट लाइन आपकी कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, वो डिनोट करनी चाहिए कि आपके ईमेल में क्या क्या जा रहा है. सेकेंड थिंग इज़ कीप द ईमेल ब्रीफ, विच मीन्स नॉट मोर देन वन स्क्रीन साइज. एक स्क्रीन साइज से ज़्यादा लंबा ईमेल नहीं होना चाहिए. यूज़ अ प्रोफेशनल फॉन्ट. सो इफ़ यू लुक एट द बॉटम यू विल हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट्स. कई सारी तरह के फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम प्रोफेशनल फ़ॉन्ट ही यूज़ करें. वन ऑफ देम कुड बी sans serif फॉर एग्जांपल, और टाइम्स न्यू रोमन. सेकेंड थिंग इज फॉन्ट साइज. दैट शुड ऑल्सो बी अप्रोप्रिएट. डोंट यूज़ टू लार्ज अ फॉन्ट साइज. बहुत बड़ा फॉन्ट साइज नहीं यूज करना चाहिए until and unless you require it for a particular purpose. अगर कोई पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, पर्टिकुलर एम्फेसिस के लिए आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं. अदरवाइज यूज़ अ प्रोफेशनल फॉन्ट साइज विच इज़ द नॉर्मल फॉन्ट साइज. एंड देन दीज थिंग्स यू कैन यूज़ फॉर मेकिंग समथिंग बोल्ड. किसी को एटलिक्स में करना है, अंडरलाइन करना है, यू कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट फॉन्ट कलर्स. बट रिमेंबर अगेन, प्रोफेशनल फॉन्ट्स आर लाइक ब्लैक और ब्लू. Use something which is soothing, something which is neutral. Now let's move to the next email etiquette, which is check the punctuations, grammatical errors or autocorrect errors. Next one is you're going to use CC and BCC. Don't use or don't put more than 4 people in two part of it. Another thing and very important part, respond to an email, don't react. Keep your emotions in check. Remember, जब हम ऑफिस सेटिंग में होते हैं, it is possible that somebody has annoyed you. It is possible that you have not found somebody's email in good taste. But in an official setting, एक जब ऑफिस सेटिंग में आप हैं तो ये हमेशा डिज़ायरेबल है कि आपका टोन पोलाइट हो, हम्बल हो. यू मे बी फर्म ऑन सर्टेन पॉइंट्स, बट डोंट बी रिस्पेक्टफुल, डोंट बी रूड. बिकॉज रिमेंबर, व्हेन वी टॉक टू ईच अदर, दैट थिंग डज नॉट गेट रिकॉर्डेड. बट व्हेन वी राइट एन ईमेल, एवरीथिंग इज अंडर रिकॉर्ड. एंड इट इज़ पॉसिबल that you may regret what you write today, and if it is regretful, then things are going to be bad for you. So keep your emotions in check, and the best way to do is write an email, put it in draft and send it after some time if you think that you have been emotionally overcharged. अगर आप थोड़े से annoyed वाले मूड में लिख रहे हैं तो हमेशा उसको ईमेल को थोड़ी देर के लिए या थोड़े टाइम के लिए ड्राफ्ट में रखें, उसके बाद में उसको रीड करें
and if you find it okay, then only send it to the colleagues in the organization. Next thing is have professional signature. So if you look at the bottom, this pen sign, this allows you to put different signatures in your email. Use an appropriate signature, which means that your name and your designation is going to go. But if you're functioning in different capacities at different places, use an appropriate signature, and you can interchange signatures. Now this facility is available, so it is not a static thing. This field is dynamic, so you can use different signatures from here. जो appropriate हो उस email के वही आप signature use करें. And the last thing and the very important one, read the email before you hit the send button. And this remains the bottom line of all email communications, because if you do it without rereading the email, if you hit the send button without rereading the email, it is possible that you may send a wrong communication. Chances of going wrong are higher than being right. And there is another thing that you can do in an email. If you go to the settings, setting में जाकर के आप उसका delayed transmission कर सकते हैं, and that delayed transmission can be up to 30 seconds. Sometimes we recognize that we have made a mistake as soon as we hit the send button. So if you have that check there, you can cancel the sending of email within 30 seconds time. So you can use that facility also. So this is about the etiquettes, and if you look at the email size, it's just one screen and it is to the point and brief, and this is how email communications should be. So this is all for today. Thank you all very much. Happy emailing.